Hello students, again I am here with chapter number 1 of class first. We have read the chapter. Now we will do all the exercises. So let's try one. In let's try one, what you have to do, you have to looking at the picture. So look at the pictures on page number 1. तो आपको जो पिक्चर्स हैं पेज नंबर 1 पे उनको देखना है. फर्स्ट वन इज़ फाइंड द पिक्चर दैट शोज ओनली द टीचर स्टैंडिंग. आपको उस पिक्चर को देखना है जिसमें ये दिखाया गया है कि टीचर खड़े हैं. नाउ वी विल फाइंड इट वेयर द टीचर इज स्टैंडिंग. ओके, इन पिक्चर नंबर 3 द टीचर इज स्टैंडिंग. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज number 3. Now in next question find the picture with 3 children holding a book. अब आपको 3 बच्चों की पिक्चर ढूंढनी है जो जिन्होंने बुक पकड़ी हुई है. सो अगेन वी आर गोइंग ऑन द पेज नंबर फर्स्ट. सो नो, दिस इज़ नॉट देयर, दिस इज़ नॉट देयर. 1 2 1. ओके, आई गॉट द आंसर. दिस पिक्चर 3 students are here and one student has hold the book. So the answer of this question is 4. Now find the picture with welcome written on it. अब आपको पिक्चर ढूंढनी है जिसमें वेलकम लिखा हुआ है. So we are going to find it. So picture number 1. See, welcome is here. Welcome लिखा हुआ है ना. So the answer of that question is picture number 1. So I hope you all have got the answer. So this answer you have to do in your HW also. Now phonics. I know phonics in class UKG. मेरे को पता है कि आपने phonics की UKG में प्रैक्टिस की है. So everyone knows the phonics. लेटर आइडेंटिफाई करना है, मतलब ढूंढना है, आपको पता करना है कि पिक्चर बनी है उसका फर्स्ट लेटर क्या है. सो एक्सरसाइज लेट्स ट्राई टू सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट बिगिन विद द गिवन लेटर. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो हमको क्या करना है, ये वाला जो आपको लेटर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें जो जिस भी स्पेलिंग से मीन्स इस लेटर से जिस चीज़ की स्पेलिंग स्टार्ट होती है उसको सर्कल करना है. सो बी फॉर बॉल एंड दिस इज़ डी फॉर डॉल. सो इट इज़ बी and that is C for cap. Now next one, A. This is A for X. So the answer is X. This is C for computer and this is F for fish. So the correct answer is X. In next exercise, C. So first picture is of B. B for bee, G for goat and C for car. So the right answer is C for car. In next picture there are 3 pictures. So first picture is S for shoes, P for parrot, T for tap. So the correct answer is P for parrot. Now remaining questions are here. So H for this is, what is this? This is ice cream. So I for ice cream, L for lock and this is H for hat. So the correct answer is hat. In next picture the letter is L. So L for lion, D for dog and C for cow. So the correct answer is L for lion. I hope you have understood this one. Now in next exercise what we have to do, let's try 3. Write the first letter of the name of each animal. अब आपको क्या करना है, हर एक एनिमल को देखकर और इसके फर्स्ट लेटर को लिखना है. सो दिस इज F for fish and this is horse. So the first, this is frog. So the first letter is F. This is goat. So the first letter is G. This is dog. So the first letter is D.
This is cat. So the first letter is C. This is fox. So the first letter is F. This is monkey. So the first letter is M. This is mouse. So the first letter is mouse. Now you have to do this one, this exercise in your HW notebook, and you have to submit your notebook in your group. Submit your homework in your group. Thank you and have a nice day all of you.